हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। दिस विल बी द फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। हम लोग कुछ पार्ट में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में विल टॉक अबाउट फर्स्ट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सेकंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट glycolysis में we'll talk about the pathway, the significance, as well as the different enzymes that is present in it, the energy yield regulation, as well as inhibitors present, कुछ modifications of glycolysis and some clinical scenarios around glycolysis. थर्ड हम लोग बात करेंगे अबाउट पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंड इट्स पाथवे, यानी यहाँ पे भी हम लोग पाथवे और रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एज वेल एज सम क्लिनिकल। तो क्लिनिकली बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो है शुरू में बायोकेमिस्ट्री बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, बट ग्रेजुअली विल अंडरस्टैंड कि इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जब तुम क्लिनिकल के साथ रिलेट करके पढ़ोगे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स देयर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। अभी ग्लूकोज जो है, सपोज दिस इज द इंटेस्टाइन and the glucose molecule that is present here, it has to be absorbed, right? Now glucose that is present is hydrophilic, और जो membrane है intestinal membrane that is hydrophobic। क्यों? क्योंकि जो intestinal cells है that is lined by the plasma membrane, so the plasma membrane is made up of a lipid bilayer, so that is why the water lover, that is the glucose being hydrophilic, cannot cross this intestinal layer, ठीक है। that is why the transporters is needed, that is the significance कि transporters क्यों need क्यों है transportation के लिए। okay, so if we talk about that this is the lumen, or suppose we are considering this is the lumen, यहाँ पे we have the two intestinal cells, okay, this is the intestinal cell, and on the other side we have the blood। तो यहाँ पे क्या है, lumen है and intestinal cell is present। so for absorption of glucose we have a transporter that is present, and this transporter name is sodium dependent glucose transporter 1, that is the sGLUT1, ठीक है। तो let's talk something about this sGLUT1। नाम से ही समझ आता है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, so it is sodium dependent, and it helps in unidirectional transport। मतलब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, it will move only from the lumen to the intestinal cell, it won't move the other way around, so it's unidirectional transport, it is a secondary active transport। अभी secondary active transport क्यों इसको बोलते हैं, we'll learn it now। the intestinal cell that is present, it has two membranes. One is this membrane, let's highlight it with a different color. This membrane that you can see, it is facing towards the lumen, so that is why this is called as the luminal border, and the side that is not facing the border, that is the opposite border, it is the basolateral border, okay। So on this basolateral border we have a pump called as the sodium potassium ATPase pump। This sodium potassium ATPase throws out 3 sodium out of the cell and picks 2 sodium potassium into the cell। So inside the lumen that is present, the sodium concentration that is present, it increases, और जो lumen से sodium बाहर जा रहा है, this because of this the sodium concentration inside the lumen inside the intestinal cell it decreases, तो एक gradient form हो जाता है for the sodium। तो this causes that
sodium to travel through this S-GLUT1 from the lumen to the intestinal cell. So sodium moves, and along with that, this S-GLUT1, it actually carries a molecule of glucose as well. So it is carrying sodium and glucose, two molecules simultaneously. That is why it is also a symporter. और secondary active transport क्यों है? This is because with the it is utilizing this energy or the gradient that is created by sodium potassium ATPase to transfer sodium as well as glucose into the intestinal cell. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इसलिए इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. एक्टिव क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, बट इट इज़ सेकेंडरी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइक प्राइमरी. यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है, विल कॉल दिस एज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, नेक्स्ट जिसके हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज़ द, तो द ल्यूमेन से तो इंटेस्टिनल सेल तक हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज का हो गया. बट देर इज़ ऑल्सो अनदर ट्रांसपोर्टर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन विच विल थ्रो आउट द ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टिनल सेल टू आउटसाइड. ठीक है, सो दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द GLUT2. तो GLUT2 molecule, it will help in the transportation of this glucose from the intestinal cell into the bloodstream. Okay, so if we talk about a bit about the characteristics of GLUT2, first of all, it is sodium independent, which is pretty much obvious. एंड जो यहाँ पे है कोई एटीपी यूज़ नहीं हो रहा है, एंड इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, सो इट इज़ अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. And it is possible in both the directions, so it is bidirectional as well. Passive, whether it is moving from a high concentration to a low concentration, that means it is along the concentration gradient. Concentration gradient. So whenever this molecule is moving, the mechanism of action, it is basically by a ping pong mechanism. If we consider this basolateral membrane, so let us suppose there is a number of glucose molecules on this side towards the in the intestinal cell, and let this be the bloodstream where there is lesser glucose molecules. ठीक है, so where the pink state is the that state where it is facing towards high glucose concentration. Okay, so this is the intestinal cell, and the and when and one of these glucose molecule would bind to this carrier protein. So after that, the state of this transporter will reverse, and it will face towards the low concentration area, and then it will throw this glucose molecule out into the bloodstream. So this is the Pong state. The Pong state is the one which faces towards the low glucose concentration. Okay, so this is a mechanism in which the GLUT2 molecule would transfer its molecules, the glucose molecules. Okay, so ये हो गया. अभी सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या सिर्फ एक ही है या फिर और भी टाइप्स प्रेजेंट है? Yes, indeed, the sodium dependent glucose transporter is of another type as well, that is the S-GLUT2. उसके पहले we'll understand a bit of clinical regarding this S-GLUT. Whenever you are suffering from dehydration, कभी भी अगर dehydration बहुत, अगर vomiting अगर तुम करोगे तो in general तुम्हारे माँ बाप you will be given ORS, right? तो ORS that is the oral rehydrating solution. तो dehydration के टाइम में ये बहुत काम आता है. क्यों?
क्योंकि ORS में जो constituents present है that is actually a mixture of sodium and glucose. So whenever you are eating this sodium as well as glucose, through that SGLUT1 transporter present in your luminal border of that intestinal cell, the sodium and glucose will get absorbed and it will re-energize you. Okay, so this is one clinical on, and there is another type of SGLUT also present called as the SGLUT2, which is actually present in kidneys. If we draw a rough diagram regarding kidneys, okay, so whenever there is an ultrafiltration that is taking place inside this proximal convoluted tubule or this glomerular filter that is produced, there is a large number of glucose molecules that are present. Okay, hello. So this glucose needs to be reabsorbed. So this reabsorption of glucose takes place by the SGLUT2. So it helps in the reabsorption of glucose मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा बहुत क्लिनिकल सिनेरियोज प्रेजेंट है. दैट इज एक जीन है दैट कोड्स फॉर दिस SGLUT2. सो एवरीथिंग इन अ बॉडी, एवरी काइंड ऑफ प्रोटीन, इट इज कोडेड बाय अ जीन. सो वन जीन दैट इज प्रेजेंट दैट इज S. द नेम ऑफ द जीन इज SLC5A2. ठीक है, तो दिस SLC5A2 कोड्स फॉर दिस SGLUT2 transporter. ठीक है, so if this gene, there is a genetic mutation, suppose there is a genetic mutation of SLC5A2, then what will happen, this SGLUT2 will stop functioning. So जो glucose है that will actually be present in urine. मतलब even if the glucose level in the blood is actually below the threshold level, that is 180 milligram per deciliter in the blood, the glucose will still pass out through the urine. क्यों? क्योंकि glucose absorption नहीं हो रहा है. तो this is condition is called as a renal glycosuria. Renal glycosuria मतलब the glucose is present in urine. Because of a defect in the kidneys. Now this renal glycosuria is actually deliberately caused in a condition. तो वो condition कौन सा है? In diabetes. In diabetes that is hyperglycemia is present. ठीक है, to reduce this hyperglycemia, we use inhibitors of SGLUT2. तो इससे क्या होगा कि some of the glucose, the SGLUT2 inhibitors would cause the inhibition of its SGLUT2. तो जो है कि ग्लूकोज जो है that will be get excreted out through the urine, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्लूकोज लोड in the blood will decrease. So this is beneficial. So inhibitors के नाम is actually belong to a category of drugs that is glifoxins. Okay, तो SGLUT2 के बारे में भी बात हो गया. So apart from this in these transporters which needs to be studied in detail, that is GLUT2, then SGLUT1 and SGLUT2, we have other glucose transporters as well. Let's talk about that. So GLUT1, remember it is present in brain. Then we have the GLUT3 that is present in neurons. Okay, GLUT2 we have just studied, it is present in the basolateral border
of intestinal cells. So remember, what are basolateral border? Basolateral border, the one that is pressing towards the lumen is the luminal border, and the one that is present facing on the opposite side, that is the basolateral border. Okay, as well as in the beta cells of pancreas. So this GLUT2 that is present, it actually has a very high Km value for glucose or a low affinity, क्योंकि its main function is actually to regulate the blood glucose level. मतलब एक एग्जांपल लेके समझाऊँ तो this is the beta cell of pancreas, and through this whenever there is a very high glucose level, because it has a very low affinity, GLUT2 transporter का बहुत low affinity है to glucose, so only when the glucose level is very high, excessively high in hyperglycemia, only then this GLUT2 transporter gets activated. So only when the glucose level is very very high, then the GLUT2 transporter के through क्या है, the glucose enters into this beta cells. Okay, फिर ATP का accumulation होता है, as well as the sodium potassium ATPase gets blocked. ठीक है, मतलब सोडियम पोटेशियम ATPase नहीं, the potassium channels that are present, this gets blocked. तो पोटेशियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स, तो क्या है, द कैल्शियम चैनल्स आर ओपन, एंड दिस कैल्शियम चैनल्स एक्चुअली कॉज द इंसुलिन रिलीज. ये मैं बाद में डिटेल्स में भी पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए जान लो, दिस GLUT2 is gets activated only in hyperglycemic condition, and it causes the beta cells of the pancreas to release the insulin. ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. लेट्स मूव ऑन टू GLUT4. GLUT4, remember, it is present in heart, adipose tissue and skeletal muscles. GLUT5, remember, it is very very important because it helps in fructose absorption. मतलब this also is present in the luminal border of the intestinal cell. यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, and it is very very important as it is an exception. Always remember, exceptions are very important. इसके अलावा भी GLUT6 इज़ प्रेजेंट, GLUT7 इज़ प्रेजेंट, GLUT8 और 9 भी प्रेजेंट होता है, बट एज एन एक्सेप्शन यू कैन रिमेंबर GLUT9, कि जनरली द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, बट GLUT5 इट इज़ एक्चुअली फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर, एंड GLUT9 इज़ एक्चुअली यूरेट ट्रांसपोर्टर. So if there is any defect in this GLUT9, it will actually lead to gout. ठीक है, so that makes us an end to the glucose transporters. Next हम लोग जाएंगे to glycolysis. Glycolysis के बारे में तुम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा. It is actually, you would have studied about glycolysis in your NEET exam as well. So it is also called as Embden-Meyerhof pathway, EMP pathway, Embden-Meyerhof pathway. If we talk about the site, it takes place in all organs, मतलब सब ऑर्गन्स में होगा, लिवर में होगा, हार्ट में होगा, सब जगह पे होगा, ब्रेन में होगा, बट एंड ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट, मतलब ऑर्गेनली कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया. इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म. ओके, रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पाथवे. पाथवे का सिंपल, मैं एक निमोनिक तो नहीं दूंगी, बट आई विल टेल a way in which you can remember the pathway very easily. ठीक है, so remember that in the first step और third step में ATP का utilization होगा, so that means a phosphate group will get added. Phosphate group will get added. Remember, glucose से start होगा, always the pathway starts from glucose. Of course others से भी start हो सकता है, but glycolysis यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो रिमेंबर कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप में हम लोगों का फॉस्फेट ऐड होगा. सेकेंड स्टेप में रिमेंबर देयर इज़ अ आइसो
आइसोमर फॉर्मेशन, ठीक है, आइसोमेरिज्म होगा यहाँ पे। फोर्थ स्टेप में रिमेंबर देयर वुड बी अ ब्रेक डाउन, मतलब जो फॉर्मेशन होगा थर्ड स्टेप में जो भी प्रोडक्ट वो ब्रेक डाउन होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा। देन अगेन रिमेंबर फिफ्थ स्टेप में अगेन एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा और उसके साथ साथ एक NADH2 प्रोडक्शन भी होगा। अगेन रिमेंबर कि सिक्स स्टेप में और नाइन्थ स्टेप में देयर वुड बी ATP फॉर्मेशन, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप होगा दैट विल गेट रिमूव्ड, ATP फॉर्मेशन होगा। यू ऑल जनरली रिमेंबर दिस फ्रॉम योर नीड कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में ATP फॉर्मेशन होता है, ATP ब्रेक डाउन होता है, और सिक्स एंड नाइन्थ स्टेप में ATP फॉर्मेशन होता है। अभी जो सेवन्थ और एट्थ स्टेप है, रिमेंबर कि सेवन्थ स्टेप में अगेन एक आइसोमेरिज्म होगा, दैट इज देयर इज एन आइसोमर फॉर्मेशन, ठीक है। और जो एट्थ स्टेप है वहाँ पे अ वाटर मॉलिक्यूल विल गेट रिमूव्ड एंड इट विल एंड अप इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेनॉल पाइरुवेट, इट विल फॉर्म फॉस्फेनॉल पाइरुवेट, ओके। तो इसके बेसिस पे विल राइट आउट द एंटायर स्टेप। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर यू टू रिमेंबर इट, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर इट। तो ये यही फंडा है, इसको रिमेंबर करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन पाथवे। तो लेट्स मेक इट अ रेफरेंस कि फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से एक फॉस्फेट ऐड होगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो 1 ATP is getting utilized. So remember, whenever ATP is getting utilized or whenever ATP is getting broken down, kinase is the enzyme. So either hexokinase will be used here or glucokinase. सब एंजाइम रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, बट फ्यू एंजाइम्स यू नीड टू रिमेंबर एंड दिस इज़ वन ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स। देन सेकेंड स्टेप में आइसोमर फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ ग्लूकोज का बहुत सारे आइसोमर्स है, बट वन जो हम जनरली बहुत यूटिलाइज करते हैं दैट इज़ फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड द एंजाइम इज ऑल्सो रिमेंबर दैट इज एन आइसोमरेज एंजाइम, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। नो नीड टू रिमेंबर दिस एंजाइम मच, सिर्फ आइसोमरेज लिखोगे तो भी चलेगा। और डिफरेंट जो क्लासिफिकेशंस है एंजाइम्स के वो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आई गेस विल टॉक अबाउट इट आफ्टर वी कंप्लीट दिस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और मोर लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, है ना। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। थर्ड स्टेप इज अगेन अनदर फॉस्फेट विल गेट एडेड। सो अगर और एक फॉस्फेट ऐड हो गया, इट विल फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, राइट। एंड द एंजाइम अगेन काइनेस ही होगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इसका इम्पैक्ट ऑन द ग्लाइकोलाइसिस इज profound, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी रिमेंबर्ड। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या बोला था, क्या होगा, ब्रेक डाउन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज इट विल ब्रेक डाउन into glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxy acetone phosphate, ठीक है। The two enzyme molecules are interconvertible in the presence of again isomerase. देन फिफ्थ स्टेप में मैंने क्या बोला था, एक फॉस्फेट ऐड होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड NADH2 मॉलिक्यूल वुड बी फॉर्म्ड। रिमेंबर, जहाँ पे भी NADH2 मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड, द एंजाइम दैट विल बी यूज्ड is actually dehydrogenase, okay. So remember the enzyme name is glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. तो कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्यों, क्योंकि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी तो ऐड हुआ ना, सो इट इज़ फॉर्म्ड। नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला और एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा क्योंकि देयर विल बी एन ATP फॉर्मेशन। सो
the ADP is getting converted into an ATP and it will lead to the formation of 3-phosphoglycerate. Enzyme name bisphosphoglycerate kinase. Now I said the 7th step again, there will be an isomer formation. So 3-phosphoglycerate will get converted into 2-phosphoglycerate in the presence of phosphoglyceromutase. यहाँ पे ATP का एक breakdown दिखाना मैं भूल गई. So an ATP will be used up in the 3rd step and the 1st step. Next, again in the 8th step, phosphanol pyruvate will get formed. In this process, enolase enzyme will be used. It is also a very important enzyme. क्यों मैं बताऊंगी, but it's not exactly a regulating enzyme. ठीक है, तो यहाँ पे there will be water removal और phosphanol pyruvate का formation हो जाएगा and finally phosphanol pyruvate will get converted into pyruvate. अभी यहाँ पे again there is an ATP formation. In the presence of pyruvate kinase. Remember, this is again another very important enzyme that needs to be rememberable. So जो 3 enzymes हमको remember करने हैं, one is the hexokinase or glucokinase, phosphofructokinase, and another is the pyruvate kinase. Okay. अभी pyruvate can either undergo a aerobic or an anaerobic pathway. In aerobic pathway, in the presence of lactate dehydrogenase, जहाँ पे NADH का utilization हो जाएगा, it will produce lactate, and or an aerobic pathway where there would be utilization of oxygen to produce acetyl CoA. Anaerobic का pathway मैं बोल देती हूँ, that is pyruvate in the presence of lactate dehydrogenase will produce lactic acid. जहाँ पे NADH will get used up. Okay. If you talk about the energetics कि कितना energy production हो रहा है, so you will see that यहाँ पे जो after this breakdown, this glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate are interconvertible to one another. ठीक है, तो from this time the reaction will occur 2 times. क्यों? क्योंकि both are inconvertible. ठीक है, हमने एक reaction लिखा from glyceraldehyde 3-phosphate, but once dihydroxyacetone phosphate in the presence of isomerase it gets converted to glyceraldehyde 3-phosphate. This reaction again will take once again, so 2 बार reaction होगा. That means जो ATP formation है that will occur 2 times and multiplied by 2 it will occur 4 times. और 2 ATP already पहली बार यूज़ हो गए, तो overall there would be 2 ATP that will be formed. Anaerobic में NADH की utilization नहीं होगा, so that is why only 2 ATP is getting formed. Next, अगर हम aerob की बात करें तो NADH is getting formed as well. Now one NADH molecule actually produces, let's write it with a different color. One NADH will actually produce 2.5 ATP. ठीक है, तो 2 NADH is getting utilized, so aerob में 2 ATP is getting formed and also 2 NADH is getting formed. So NADH में when it will be undergo the ETC, that is the electron transport chain, this 2 NADH will actually lead to the formation of 2.5 into 2, that is 5 ATP. So overall 5 plus 2 7 ATP would be formed through the aerobic pathway. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग इनहिबिटर्स की बात करें
सो पहला इनहिबिटर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बारे में बात करते हैं. दैट इज देयर आर 2 इनहिबिटर्स. One is iodoacetate, another is the arsenate. है ना? And for enolase also we have another inhibitor, that is the fluoride. Okay. So glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase is inhibited by two molecules or elements. One is the iodoacetate, another is the arsenate. Arsenate कैसे glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase को inhibit करता है? It inhibits by removing the phosphate. मतलब it prevents the inorganic phosphate from binding. So glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase automatically gets inhibited. Another way it is inhibiting is by another enzyme, that is enolase, is inhibited by two molecules. It is getting inhibited by fluoride, है ना? एंड फ्लोराइड कैसे इसको इनहिबिट कर रहा है? बाय रिमूविंग द मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. इसकी वजह से जो एंजाइम जो है एक्ट ही नहीं कर पा रहा है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ गेटिंग इनहिबिटेड. ओके, तो सपोज वी हैव अ ब्लड कल्चर दैट इज़ गेटिंग टेकन. सो ब्लड कल्चर, जब वी टेक द ब्लड, सपोज वी आर टेकिंग द ब्लड सैंपल, we have some blood sample that is present and we want to estimate the glucose level that is present here. So glucose जो है it will continuously undergo glycolysis because the enzymes of glycolysis are present in the blood sample. तो जो original blood glucose level present है blood में, वो हम लोग measure नहीं कर पाएंगे क्योंकि blood glucose level already थोड़ा सा decrease हो जाएगा. So in order to prevent that हम लोग inhibitors of glycolysis यूज़ करते हैं. और generally जो inhibitor हम यूज़ करते हैं, we use sodium fluoride in blood samples. और फ्लोराइड किसको इनहिबिट करता है? एनोलेस को. अगर फ्लोराइड एनोलेस को इनहिबिट करेगा तो ग्लाइकोलाइसिस itself will get inhibited. तो blood glucose level जो है that won't get decreased. ओके, सो दिस आर द इनहिबिटर्स. नेक्स्ट, अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस का सिग्निफिकेंस क्या है इतना, then first of all it is the only process that is taking place in all kinds of cells. all cells में glycolysis होता है. there is not a single mechanism that is taking place in all cells, whereas glycolysis सभी जगह पे present है. ठीक है. और एंड इट इज़ इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट फॉर आरबीसीज, क्योंकि आरबीसी में जो है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट है. सो इट इज़ एक्चुअली द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन एरिथ्रोसाइट्स. तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इज एक्चुअली द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसीज. अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी डिफेक्ट आएगा, सो व्हाट विल हैपन, दिस सपोज दिस इज एन आरबीसी और यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल है उसको भी तो फंक्शन करने के लिए एटीपी की ज़रूरत है ना. तो अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, सो देयर वुड बी डिक्रीज इन द एटीपी. सो डिक्रीज इन द एटीपी वुड कॉज ब्लॉक इन द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस. तो जो है द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के मेन काम क्या है? That is, it removes the sodium outside and pulls the potassium into the cell. तो अगर ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस काम करना ही बंद कर देगा, सो देयर वुड बी सोडियम एक्यूमुलेशन इनसाइड द आरबीसीज. तो जिसकी वजह से इट विल लीड टू इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा? दिस विल कॉज द वाटर टू एंटर इनटू द आरबीसीज and it will lead to cell swelling and finally hemolysis. That means it can lead to hemolytic anemia as well. A very very important question. Okay, next, जो मसल्स में दैट इज़ प्रेजेंट
in muscles, whenever there is a lack of oxygen, the anaerobic glycolysis pathway there is taking place. And because of this anaerobic glycolysis pathway, the lactic acid is getting produced and it finally can lead to fatigue as well. So जो muscle extra work कर रहा है in the absence of oxygen, it is coming from that anaerobic glycolysis. Further जो है in heart is actually has a very poor glycolytic activity. मतलब अगर if there is an ischemia in heart, that is oxygen supply in the heart is low, the heart cannot compensate itself by undergoing anaerobic glycolysis. So that is why अगर ischemia होता है, there is high chances it can lead to death of a heart tissue or basically an infarction. So it basically cannot survive ischemia. Understood? These are basically the significances. Next we'll talk about the regulation. Regulation different types का होगा. One is the hormonal and another is the allosteric regulation. Let's talk about hormonal regulation first. If we talk about hormonal regulation, मतलब insulin और glucagon, these are the main enzymes, main hormones that we will talk about in more or less the entire carbohydrate metabolism. अगर फैट स्टेट हम लोग कंसिडर करेंगे, इन फैट स्टेट जो होगा मतलब इफ़ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, तो आफ्टर दैट जो फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो उसके हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से इंसुलिन रिलीज होगा. तो फैट स्टेट में ऑलवेज देयर वुड बी अ हाई इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो. एंड रिमेंबर ग्लूकागॉन इंसुलिन is responsible for dephosphorylation. मतलब because of this high insulin glucagon ratio, it will dephosphorylate the enzymes of glycolysis. जिसकी वजह से the glycolysis process would actually increase, because जो enzymes है of glycolysis, it is actually active in the dephosphorylated state. ठीक है. सेकेंड जो मतलब ये तो हो गया एक कंडीशन जहाँ पे इंसान फैट स्टेट में था. नेक्स्ट अगर हम लोग कंसिडर करें इन अ स्टार्विंग स्टेट. स्टार्विंग स्टेट में क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, कि एज अ पर्सन इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, सो ब्लड ग्लूकोज कम होगा. तो एट दैट टाइम ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विल हैव लो इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो, क्योंकि ग्लूकागॉन का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से the enzymes that are present, it will phosphorylate the enzymes. It will phosphorylate enzymes of glycolysis. तो जिसकी वजह से the glycolysis will actually decrease. It will inhibit the glycolysis. क्यों? क्योंकि द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर एक्टिव इन द डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट. फॉस्फोराइलेशन की वजह से एंजाइम्स इनएक्टिव हो रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस कम होगा. तो ये हो गया एक फर्स्ट हार्मोनल रेगुलेशन. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट एलोस्टेरिक रेगुलेशन. हम लोग जब पाथवे की डिस्कस कर रहे थे तो वी डिस्कस्ड अबाउट सम की एंजाइम्स, है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट दोज की एंजाइम्स एज वेल. One is the hexokinase, phosphofructokinase 1. Another is the pyruvate kinase. Let's talk about some activator and an inhibitor. ओके तो जो एक्टिवेटर है, इनहिबिटर है फॉर ऑल द थ्री एंजाइम्स, दैट इज एटीपी.
ऑलवेज रिमेंबर जो फॉस्फोफॉस्फोकाइनेज 1 का इनिबिटर है एटीपी है एज वेल एज सिट्रेट इज प्रेजेंट, ठीक है। और फॉस्फोफॉस्फोकाइनेज 1 का एक्टिवेटर जो है इट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट as well as AMP. Okay, remember this is allosteric activator and inhibitor. तो अगर रेगुलेशन पूछे तो इसको ही डिटेल्स में समझा सकते हो और मोरलेस दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स। इसके अलावा भी जो हेक्सोकाइनेस है, रिमेंबर जब हमने पाथवे की बात किया था वी टॉक्ड अबाउट 2 एंजाइम्स दैट इज हेक्सोकाइनेस एज वेल एज ग्लूकोकाइनेस, है ना। हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस दोनों का बात किया था, तो उसका डिफरेंस क्या है दोनों में, इज देयर एनी डिफरेंस और दे आर सिनोनिमस की हेक्सोकाइनेस की जगह हम ग्लूकोकाइनेस भी बोल सकते हैं, नो दे आर इट एक्चुअली सिनोनिमस, देयर इज डिफरेंस एंड विल टॉक अबाउट द डिफरेंस राइट नाउ। ग्लूकोकाइनेस, अगर हम शॉर्ट में बात करें कि ग्लूकोकाइनेस क्या है एग्जैक्टली, ग्लूकोकाइनेस इज एक्चुअली अ आइसोफॉर्म ऑफ हेक्सोकाइनेस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब प्रॉपर्टी क्या सेम है या फिर डिफरेंट है, ऑफ कोर्स देयर इज सम डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। हेक्सोकाइनेस एक्चुअली हैज़ अ वेरी हाई अफिनिटी फॉर ग्लूकोज एंड ऑल्सो देयर इज अ लो केएम वैल्यू, whereas ग्लूकोकाइनेस की बात करें तो देयर इज अ लो अफिनिटी and a high Km value for glucose. Always remember that Km value is inversely proportional to affinity. इसके बारे में हम लोग बाद में enzymes chapter के बारे में ही इसके बारे में बात करेंगे about Km and its relation with affinity कि ऐसा क्यों हो रहा है और Km exactly क्या होता है वहाँ पे बात करेंगे। तो हाई अफिनिटी और लो अफिनिटी की अभी वाई इज देयर सच अ प्रॉपर्टी डिफरेंस, द मेन रीज़न फॉर दिस प्रॉपर्टी डिफरेंस इज बिकॉज दोनों के फंक्शन में, मेजर फंक्शन में, कोर फंक्शन में डिफरेंस है। हेक्सोकाइनेस का मेन फंक्शन है इज एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब बाय ग्लाइकोलाइसिस इट प्रोड्यूसेस द एटीपी एंड इट हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, व्हेयरएज ग्लूकोकाइनेस जो है इट मेनली हेल्प्स इन द ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, मतलब ब्लड ग्लूकोज में व्हेनेवर the blood glucose level rises to high then this glucokinase gets activated, क्योंकि low affinity है तो only when high glucose is present this enzyme will get activated, so then only it gets activated and this lowers the glucose level, and hexokinase is present in all cells, okay, whereas glucokinase is only present in liver. Another difference is hexokinase is inhibited by glucose 6 phosphate and actually it is not affected by insulin and glucagon hexokinase, whereas glucokinase it is actually activated by insulin and inhibited by glucagon, okay. So this difference and table is very important, so remember it. वाइवा में भी ये बहुत पूछा जाता है, प्रॉप में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट वी ऑल्सो टॉक अबाउट सम मॉडिफिकेशन ऑफ दिस ग्लाइकोलाइसिस। तो द मेन मॉडिफिकेशन ऑफ दिस ग्लाइकोलाइसिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रैपोर्ट-ल्यूबरिंग साइकिल, ठीक है। more or less the pathway is entirely similar, तो glucose is break forms fructose 1,6 bisphosphate, मतलब reaction होता है glucose to fructose glucose 6 phosphate and to fructose 6 phosphate, then fructose 1,6 bisphosphate और aldolase के presence में it divides into glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate। तो glyceraldehyde 3 phosphate जो form होता है, so it gets converted into 1,3 bisphosphoglycerate. Now from here the reaction differs, that is generally क्या है 1,3 bisphosphoglycerate directly gets converted into
3-phosphoglycerate, but here the 1,3-bisphosphoglycerate would in the presence of mutase, that is 1,3-bisphosphoglycerate mutase, it will produce 2,3-bisphosphoglycerate, that means 2,3-BPG, and in the presence of 2,3-BPG phosphatase, it will produce 3-phosphoglycerate. So what is this 2,3-BPG and why is it so important? मतलब रैपिड ल्यूबरिंग साइकिल होता ही क्यों है? What is the need? It is actually taking place, मतलब साइट कहाँ पे होता है? That is taking place in the RBCs. और जो है 10% of the glucose molecules it actually enters through this Rappaport Lubering cycle. और इसका मेन फंक्शन क्या है? आई एम प्रिटी श्योर कि तुम लोगों ने 2,3-BPG का नाम सुना होगा इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सुना होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ 2,3-BPG there is a right shift. So it causes a right shift in oxygen dissociation curve, and another it helps in the unloading of oxygen to the tissues. ठीक है, तो ये हो गया मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट मूव ऑन टू सम क्लिनिकल सिनेरियोज. क्लिनिकल हम लोग मेन बात करेंगे अबाउट कैंसर. Okay, before talking about cancer, let's talk about Warburg hypothesis or posture effect. Are they the same things? When the Warburg effect, posture effect, are they the same things? Not exactly. तो पहले हम लोग posture effect के बारे में बात करते हैं. What is this posture effect? मतलब अगर हम लोग एक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करते हैं, then both of them for require production of the same amount of ATP, तो जो साइकिल्स होगा एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में इट विल बी मच लेसर, क्योंकि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एक साइकिल में 7 ATPs प्रोडक्शन होता है, वेयर इज एनारोबिक साइकिल में एक साइकिल में 2 ATPs प्रोडक्शन हो रहा है. ओके, सो सपोज हम लोगों को 14 ATPs प्रोड्यूस करने हैं, तो सेम के लिए हम लोगों को एरोबिक में 2 साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी, वेयर इज एनारोबिक में 7 साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? So that is where the difference lies. मतलब posture effect is nothing but is actually in the presence of an aerobic glycolysis, the utilization of glucose it actually decreases. मतलब under aerobic glycolysis the glucose utilization decreases. This is nothing but the posture effect. और Warburg hypothesis जो है, Warburg hypothesis is actually operating in the cancerous cells. और सपोज देर इज पर्टिकुलर सेल दैट इज प्रेजेंट, और जो अगर सेल कैंसरस हो जाए दैट मीन्स दे विल अंडरगोज इन्वेशन एंड दे विल अंडरगोज टू मच ग्रोथ, है ना? एक के ऊपर एक ग्रोथ होते जाएगा. सो फॉर दिस ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ, वी नीड एनर्जी, एंड दिस एनर्जी एक्चुअली कम्स फ्रॉम एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस. Now one thing that needs to be kept in mind here, even though there is an aerobic glycolysis, only 2 ATP is getting produced. अभी क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? In normal cell, suppose in normal cell the pyruvate kinase is present in the tetrameric form. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि pyruvate is actually undergoing the
aerobic pathway in the presence of oxygen, and 7 ATP is getting produced through glycolysis. But if there is a cancerous cell that is present, तो वहाँ पे जो pyruvate kinase is present, it is actually present in the dimeric form. Because of this reason, the pyruvate is undergoing the anaerobic pathway. मतलब even if there is presence of oxygen, even if there is presence of oxygen, there is only 2 ATP that is getting produced. So that is, in simple terms, what is the Warburg hypothesis. जेहेतु in cancer there is a lot of oxygen that is getting utilized, there is an ischemic conditions that is present here, and hypoxia, oxygen concentration low है, so this cancer induces the hypoxia induced transcription factor 1, and this actually promotes the transcription of enzymes of glycolysis, जिससे कि there is more amount of glycolysis that is taking place, and also it increases the transcription of vascular endothelium growth factor. क्या है vascular endothelium growth factor, अपने आप से लिख लो, and this causes angiogenesis. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम लोग एक बात करें, there is a disease called as the maturity onset diabetes mellitus of the young. Maturity onset diabetes of young. मैंने ग्लूकोकाइनेस का रोल बोला था, याद है कि हाउ ग्लूकोकाइनेस इज एक्चुअली हेल्पिंग इन रेगुलेटिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, बिकॉज इट इज़ बिकॉज इट हैज़ अ लो अफिनिटी. सो जब भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है बियॉन्ड अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, दिस ग्लूकोकाइनेस इज गेटिंग एक्टिवेटेड. बट यहाँ पे इन दिस डिजीज द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्लूकोकाइनेस इज ऑल्टर्ड, and this alteration की वजह से, that is insulin cannot be released, the buildup of ATP is not taking place. So because of this reason there is hyperglycemia and the diabetes continues. ठीक है. So that puts an end to our glycolysis. Next हम लोग अगर बात करें, we talk about pyruvate dehydrogenase complex. बिफोर दैट हम लोग फेट ऑफ पायरुवेट की बात करें कि पायरुवेट किन किन स्टेप्स में जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. नेक्स्ट in aerobic pathway it can get converted into acetyl CoA, which is also the pyruvate dehydrogenase complex that we are going to describe here. In the presence of aminotransferase, it can actually get converted into alanine as well. Also, pyruvate, in the presence of pyruvate carboxylase, gets converted into oxaloacetic acid as well. In pyruvate dehydrogenase complex, there are 5 enzymes, 5 coenzymes, and 3 enzymes are utilized. We'll see it as we write down the pathway. That is pyruvate. First, in the presence of pyruvate dehydrogenase, the first coenzyme is thiamine pyrophosphate. This causes it to convert into hydroxyethyl thiamine pyrophosphate. Then, in the presence of transacetyl lipoyl dihydrolipoyl
transacetylase. This is the enzyme that is required. Lipoamide, which is actually the second coenzyme that is present, is getting converted into acetyl lipoamide. Then coenzyme A is getting added and it is getting converted to acetyl CoA, which is actually from this acetyl lipoamide, and this again produces lipoamide, which is in actually the reduced form, and this lipoamide is in the oxidized form. So to convert it back into this lipoamide, reduced lipoamide to oxidized lipoamide, we have dihydrolipoyl, dehydrogenase that is present, and this converts NAD plus FAD plus. First FAD is used, FAD plus to produce FADH2. Next we have NAD plus getting converted into NADH plus H plus. Okay, so this is the entire reaction. So first the five in coenzymes is, one is the thiamine pyrophosphate, then is lipoamide, coenzyme A, FAD plus and NAD plus. These are the five coenzymes that are present, highlighted with this green highlighter. Next, let's talk about the three enzymes that are present. One is the pyruvate dehydrogenase, another is the dihydrolipoyl transacetylase, and third is the dihydrolipoyl dehydrogenase, which is highlighted with this blue highlight. Okay, so this is the entire pathway. Okay, so पहली बात तो ये साइट मतलब किधर पे हो रहा है. It is actually taking place in the mitochondria. But glycolysis कहाँ पे हो रहा था? In the cytoplasm. Okay, next is the regulation. If we talk about the regulation, again remember, well-fed state, same, high insulin glucagon ratio. यहाँ पे भी the enzyme that is the pyruvate dehydrogenase is actually active in the dephosphorylated state. So high insulin, that means pyruvate dehydrogenase का activity more होगा. क्यों? It will be present in the dephosphorylated state. If the person is starving, then there would be high glucagon, मतलब enzyme क्या होगा? Will be present in the phosphorylated state, और enzymes inactive हो जाएगा, so pyruvate dehydrogenase will be less. So after this regulation, let's talk about clinical. मतलब if there is pyruvate dehydrogenase, if there is any problem, the pyruvate dehydrogenase will not be able to get converted into acetyl CoA, और lactic acid का production increase हो जाएगा. That means there will be lactic acidosis. Next, also we have a brain that is purely dependent on oxygen and glucose for our survival. So अगर if there is any defect in pyruvate dehydrogenase, जो oxygen के presence में जो process है, that will not be taking place. मतलब glycolysis will not be operating properly, जिसकी वजह से brain में defect आना चालू हो जाएगा, and that will it lead to neurological symptoms. Because brain always remember, oxygen and glucose is absolutely essential for brain. That's it. This puts an end to our first part in glycolysis. अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. Thank you and keep studying as well as having fun.